Hello friend, this is Manish. Welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start teaching of poetry. It is very important topic of English pedagogy for B.Ed students. Okay, whose preparation CTET, STET, KVS, UPTET and NVS. तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए. ओके अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके जो बीएड का एग्जाम होगा ना उसमें आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी. तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना. वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं. Student, today I am going to start how to teach of poetry in English. ये वीडियो जो है ना उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं. तो इसमें इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि पोएट्री क्या होता है, कितने टाइप्स का पोएट्री होते हैं, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कंटेंट यूज किए जाते हैं, है ना. तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं. और एक अच्छे टीचर्स होने के नाते आप जब क्लास में इंग्लिश की टीच करोगे तो पोएट्री को किस फॉर्म में, किस इमेजिनेशन के साथ आप बताओगे ताकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ों को पढ़ें, सुने, समझें. ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना ये ताकि इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है इंग्लिश, खासकर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश पेडागोजी होते हैं, जिनका मेथड पेपर, जिनका बीएड में इंग्लिश होता है. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पोएट्री पहले कहते किसे कहते हैं. ठीक है, तो पोएट्री इज अ जेनर्स ऑफ लिटरेचर, इज हाईली इमेजिनेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. तो पोएट्री जो है इट इज द हाईली इमेजिनेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. जो आप एक्सप्रेस करने की, जो इमेजिनेट करते हो आप, जो आप मतलब हाइपोथेटिकल बोल सकते हो, जो आप सोचते हो उसको एक्सप्रेस करते हो अपने वर्ड में, उसको पोएट्री कहते हैं. इट हैज बीन variously defined as an overflow of powerful feelings, emotion recollected in the tranquility, the best word in the best order. यानी जो वर्ड का आप सिलेक्शन करते हो पोएट्री में, उस एक सीक्वेंस में, एक वर्ड में, एक राइमिंग स्कीम में जो यूज करते हैं उसको पोएट्री कहते हैं. पोएट्री में सारे चीज द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी एंड ऑल्सो एज ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रूथ. ओके, उसके बाद जो इसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए ऑफ रियलिटी की, और जो ब्यूटी ट्रांसफॉर्म एज अ ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रूथ. कैन, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैन पोएट्री बी टॉट. दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज वेरी ऑफन आस्क्ड. ओके, इफ it can be, then what are the components that need to be explained? To begin with, it must be understood that the primary impulse of composing a poem is attainment of pleasure. The poet feels great joy in creation. The teacher has to convey this joy to the student who read that poem. The language of poetry is different from that of prose. In order to understand poetry, one need to decode the symbols and image used by the poet. पोएट्री में जो होता है, जो पोएट की फीलिंग को टीचर्स जब उसको मतलब कह सकते हैं कि जब टीचर्स कन्वे करता है तो मैसेज को, जॉय को स्टूडेंट के सामने जब, है ना, पढ़ाता है, उस कंडीशंस में वो फीलिंग आनी चाहिए. पोएट क्या कहना चाह रहा है पोएट्री में. ठीक है, जो लैंग्वेज होता है, जो उस कोड में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होता है जो कोडेड होते हैं, उसको डिकोड करना है ना, उसे बच्चों को समझाना है, सिंबल्स को बताना. बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो समझ नहीं आती है, वो सारे चीजों को बच्चों को क्या करना है, बतानी है. ठीक है, तो अब क्या क्या, जैसे कि देख लो आप, आइडेंटिफाई द स्टैंजिक फॉर्म ऑफ पोएम, है ना. फाइंडिंग आउट, इसमें फाइंडिंग आउट करना, मीटर यूज्ड, जो पोएम में मीटर यूज्ड किया गया है उसको खोजना है ना. आइडेंटिफाई करना है स्टैंजिक फॉर्म को. लोकेटिंग द फिगर ऑफ स्पीच इन पोएम. डिटरमाइनिंग द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम.
राइमिंग स्कीम क्या होता है, ये सारे चीजों को देखना है। टीचिंग द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन अ पोएम, एनालाइजिंग द पोएम क्रिटिकली, इवन apparently ordinary and commonplace word and phrases find new meaning in poetry। इस सारे चीजों को आप जो नए नए मीनिंग्स आते हैं उसको बताना है बच्चों के साथ। अ पोएट यूजेज ऑल rhetorical sources such as simile, ये सारे rhetorical sources है ना, जैसे कि सिमिलीज हो गया, मेटाफर, स्पेलिंग, पंचुएशन, हेडिंग, है ना, गिव एक्सप्रेशन टू व्हाट ही विशेस टू कन्वे, ये सारे चीजों को बताना है बच्चों के सामने। रीडिंग थ्रू द पोएम, टीचिंग पोएट्री बिगिन विथ रीडिंग ऑफ द पोएम। एट द फर्स्ट रीडिंग ए पोएम may strike you as somewhat odd in many ways. The syntax of some lines might seem crabbed and involved. You may find some curious words formation. The meaning of the poem might not come very distinct, but as you read a poem twice or thrice, it starts unfolding itself. 2-3 बार क्या करना है, पोएम को रीड करना है। Reading a poem aloud with proper accent and intonations can give a feel of its rhyme and harmony. This is important because poetry is to be enjoyed both for its meaning as well as melody, है ना। तो इस जब आप रीड करो तो एंजॉय करोगे, है ना, मीनिंग को और साथ ही साथ उसकी खूबसूरती मेलोडी को भी। A closer reading of the poem will lead you toward decoding the meaning. It has been noticed that the titles give us a starting point, at least adequate help to adjust out our response to what is to follow. Let us take the example of a poem, G.M. Hopkins. Its title, Spring and Fall, arouses expectation of a poem about the season, है ना। जो जीएम ऐसा टाइटल चूज करना है जो मतलब आपका थीम हो, आपके कंटेंट उससे रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। जैसे शॉर्ट भी होनी चाहिए, जैसे कि जीएम हॉपकिंस का क्या है टाइटल, स्प्रिंग एंड फॉल। तो ये एक्सपेक्टेशन करता है एक पोएम जो सीजन के बारे में बता रहा है। अ थीम विच इज वेरी कॉमन अमंग नेचर पोएट्स, मतलब ये जो थीम है ये पोएट नेचर पोएट को शो कर रहा है। बोथ द वर्ड्स इन द टाइटल हैव ग्रोन हैवी एंड वेरियस connotations and also rather tried through common use. Besides their literal meaning pointing to event in nature, the warmth, beauty and vitality of spring and the mellow fruitfulness in autumn. The metaphorical use, that is the springtime of life, the autumn of life is equally common, है ना। ये सारे जो टाइटल्स है सारे एक नेचर्स को शो कर रहे हैं ना, जिसके वजह से उसकी ब्यूटी को एंड विटैलिटी ऑफ स्प्रिंग को, ये सारे चीजों को। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैन अलर्ट अस टू पॉसिबल स्टेट और एस्पेक्ट ऑफ द थीम, and it is not spring and autumn but spring and fall. Fall is common substitute for autumn. This word connotes the fall of leaves, but it also has an extended meaning, the sense of a decline and fall. It could also have a religious connotation, connecting itself with the biblical narrative, implying thereby the loss of innocence, fall from Eden, fall of man in religious sense. Spring to have strong religious nuance, suggesting the source, the ever-flowing waters, the healing waters, life-giving water, and so on. Reading of the poem by the teacher may be followed by the student reading it, both reading it silently as well as aloud. आप रीडिंग दोनों तरीके से कर सकते हो, साइलेंट भी या फिर साथ ही साथ जोर से भी। दिस एक्सरसाइज विल इनेबल देम टू हैव अ फील ऑफ द पोएम and familiarize
them with the verbal expression, sound, illustration, image used in the text. A close scrutiny of the text is therefore the first step toward understanding of a poem. Now, determining the form. Various forms of poetry have been used in English literature. You must have heard of Edmund Spenser's Faerie Queene. The stanza devised by Spenser in this work is called after him that Spenserian stanza. The Spenserian stanza consists of 9 lines. The Spenserian stanza में कितने lines होते हैं? 9 lines. The first 8 lines are in iambic pentameter, followed by one in iambic hexameter. And iambic hexameter also known as Alexandrine. Rhyme royal. What is the rhyme royal? The stanza written in rhyme royal has 7 lines of iambic pentameter with the rhyme scheme AB, AB, BCC. Okay, Sir Geoffrey Chaucer used this form in his Troilus and Cressida. Shakespeare in the Rape of Lewis and Wordsworth in Resolution and Independence. अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर लिखा पोएम है एक स्टेंजा. There was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in floods. But now the sun is rising calm and bright. The birds are singing in the distant woods. Over his own sweet voice the stock dove broods. The jay make answer as the magpie chatters. And the air is filled with pleasant noise of waters. ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे. इसका राइमिंग स्कीम आप देख लेते हैं. नाइट ए, फ्लड्स बी, ब्राइट ए, वुड्स नाइट, फिर उसका फ्लड्स, वुड्स, ब्रूड्स, चैटर्स, वेटर्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं. ऐसे राइमिंग स्कीम होता है. सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट वर्ड होते हैं ना, उससे हम लोग राइमिंग स्कीम निकालते हैं. ओटोवा राइमा क्या होता है देखते हैं. द ओटोवा राइमा इज 8 लाइन स्टेंजा. ओटोवा राइमा मीन्स 8 लाइन स्टेंजा होता है ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स. ओटोवा मीन्स 8 एंड राइमा मीन्स राइम. द राइम स्कीम is AB, 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 CC. The romantic poet John Keats has used it in his hymn Isabella, and Lord Byron in Don John and the Vision of Judgment. My poem's epic and is meant to be divided in 12 books, each book containing with love and war a heavy gale at sea. A list of sleep and captains and king beginning new characters and episode are the 3 and a panoramic view of health in training after the style of Virgil and of Homer, so that my name of epics no means no mere. तो सारे आप देखोगे. B है ना, containing, C reasoning, containing, reasoning, ये सारे चीजें आप देखेंगे. ट्रेनिंग. तो ये राइमिंग स्कीम है. ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स को डिस्कस करते हैं. ब्लैंक वर्स इज वेरी फ्लेक्सिबल इंग्लिश वर्सेस फ्रॉम विच कंटेन अनराइम्ड लाइन्स ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर. फर्स्ट यूज्ड बाय हेनरी हॉवर्ड. हेनरी हॉवर्ड के द्वारा 1514-16 सेंचुरी में से यूज किया गया था. इसमें जो राइम्ड जो होते हैं वो इस नहीं होती है. अर्ल ऑफ सर्रे इट सुन, मतलब हेनरी हॉवर्ड के द्वारा अर्ल ऑफ सर्रे इट सुन बिकेम बोथ द स्टैंडर्ड मीटर फॉर ड्रामेटिक पोएट्री and a widely used form for narrative and meditative poem. Touch of the finest verses in English by William Shakespeare, John Milton, William Wordsworth, Alfred Tennyson, and Stephen has been written in blank verse. Okay, the final lines of Tennyson, Ulysses, है ना, one equal temper of heroic heart made weak by time and fate.
but strong in will to strive, to seek, to find and not to wield. फ्री ब्लैंक पर फ्री वर्सेस क्या होता है? और इन फ्रेंच वर्स लिवर, इट इज वर्स फ्रॉम दैट डज नॉट कन्फॉर्म टू एनी रेगुलर मीटर. इसमें रेगुलर मीटर नहीं होती है, जिस तरह से राइमिंग इसमें ए बी 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 ए इस तरीके से नहीं हो सकता. द लेंथ ऑफ इट्स लाइन्स इज इरेगुलर, so also its use of rhyme, if any, instead of a regular metrical pattern, it uses more flexible cadences or rhyming grouping, sometimes supported by anaphora and other device of repetition. Walt Whitman's Leaves of Grass is written in free verses. Here is a light-hearted poem by Ezra Pound in free. Ezra Pound in free verses. Sonnet क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं. A sonnet is a poem that has 14 lines. Sonnet एक poem होता है जिसमें 14 lines होते हैं. 14 lines in iambic pentameter. There are two types of sonnets, Petrarchan and Shakespearean. Petrarchan sonnet, known after the great Italian poet Petrarch, comprises in 8 lines, octave or 2 quantitative rhyme ABBA, followed by a 6 line sestet, usually rhymed CDDE or CD. The transition from octave to sestet usually coincides with a turn in the argument or the mood of the poem. The Shakespearean sonnet, also termed as Elizabethan or English sonnet, comprises 3 quatrain and a final couplet rhyming ABB, CD, EF, GG. John Keats first looking into Chapman's Homer and John Milton's How Soon Hath Time are example of Petrarchan sonnet. William Shakespeare's Shall I Compare Thee to a Summer's Day is an example of English sonnet. Ode क्या होता है? Ode. It is an ancient lyric form. ये ancient lyric form होती है. The odes of the Greek poet Pindar, 5th cent BC, were devoted to public praise of athletes. Pindar composed his odes for performance by a chorus using lines of varying length in complex 3-part structure of strophe, antistrophe, and eport corresponding to the dancing moments. In English, it is elaborately formally lyric poem, often in the form of lengthy, ceremonious address to a person or abstract entity, always serious and elevated in tone. The odes of John Keats, notably his ode on Grecian and Octave, Ode to a Nightingale, are example of Horatian ode. Ballad क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं. What is the ballad? A ballad is a folk song or orally transmitted poem telling in dramatic manner some popular story usually derived from a tragic incident in local history or legend. Ballads are normally composed in quatrain with alternating 4 stress and 3 stress line. The second and fourth line rhyming ballads flourished particularly strongly in Scotland from the 15th century onward. St. Coleridge's Rime of the Ancient Mariner, 1798, is a celebrated example. Now, discussing about meter, American English. Meter is the regular, recurrent pattern of stressed and unstressed syllable in a line of poetry. It involves the number and location of accented and unaccented syllables and the relation between them. The function of meters to produce an impression of order and control, even of restraint. It provides musical effect and pleasure in repeated sounds. Now, rhyme.
scheme. What is the rhyme scheme? The pattern in which a rhymed line ending are arranged in a poem stanza is called a rhyme scheme. Rhyme scheme may follow a fixed pattern as in a sonnet, or they may be arranged freely according to the poet's requirement. The simplest rhymes scheme are those of rhyming couplets A, B, B, C, C, or of the common quaternion form A, B, A, B, A, B, B, A, B, C, D, C, B, sorry. Figures of speech. What is the figure of speech? What is that make poetry different from prose? The syntax, the arrangement of word in order, the stanzic pattern, etc. Yes, they are very apparent distinction, but beyond all these, there are some more devices which are peculiar to poetry and are used by the poets to express their imaginations with refraction. Simile. What is the simile? This is a figure of speech which express an explicit comparison between two different objects, action, feeling, or thing using the words of comparison as or like. Let us take a few examples. Now, metaphor. Metaphor क्या होता है देखते हैं. What is the metaphor? The metaphor is described as the most important and widespread figure of speech in which one thing, idea, or action is referred to by a word or expression normally denoting another thing, idea, or action as to suggest some common quality shared by the two. Here the similarity is assumed as an imaginary identity rather than directly stated as a comparison. He is a gem is a metaphor, while he is a bright as a gem is a simile. Metaphors may also appear as a verb. Talent may blossom or as adjective. A novice may be green or in longer idiomatic expression. To throw the baby out with the bath water. Personification. This is the figure of speech by which animals, abstract idea, or inanimate thing are referred to as if they were human, as in Sir Philip Sidney lines. Invention, nature's child, field stepdame, study blues, or in tortoise swam lotus, love came to the flora. Asking for flower that is qualiest of all the flowers. Metonymy. What is the metonymy? Metonymy is the frequently used though little discussed figure of speech. It is a figure of speech that replaces the name of one thing with the name of something, is closely associated with it. A very common example is the bottle for alcoholic drink, a Oval Office for the office of the President of America, press for newspaper industry, as well no metonymy saying is the pen is mightier than the sword. इस तरह का हम बात बोल सकते हैं. Irony. What is the irony? It is the simplest of in verbal irony. It involves a discrepancy between what is said and what is really meant. The more sustained structural irony in literature involves the use of a knave or deluded hero or an unreliable narrator whose view of the world differ widely from the true circumstances recognized by the author and reader. Literary irony thus flatters its readers' intelligence of the expenses of a character or fictional narrative. Irony also suggests subtly humorous perception of inconsistency, in which an apparently strategic forward statement or event is undermined by its context so as to give it very different significance. Alliteration. What is the alliteration? The repetition of the same sound, usually initial consonants of words or of straight syllables in any sequence of neighboring words.
Alliteration provide for lyrical quality of poetry. Repetition of similar sounds produce music and depend on the character of the sound repeated. Oxymoron. What is the oxymoron? This figure of speech usually combines two contradictory terms in compressed paradox, as in the word bittersweet or the phrase living death. Oxymoronic phrases like Milton's darkness visual were especially cultivated in 16th and 17th century poet. In Shakespeare's Romeo and Juliet, Romeo utters several oxymorons in one speech. What is the hyperbole? Hyperbole is exaggeration for the sake of emphasis in a figure of speech, not meant literally. An everyday example is the common way of complaint. I have been waiting here for ages. Hyperbolic expressions are common in the inflated style of dramatic speech known as bombast. In A Rape of the Lock, Alexander Pope used hyperbole to describe the influence of Belinda's beauty. Thank you for watching my video. Bye bye.